Welcome back. In this tutorial, we'll discuss how to use the document.getElementById in JavaScript. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सिंपल एग्जांपल यहाँ पे. सो document.getElementId is basically JavaScript method. So used to access and manipulate elements. ठीक है. तो चलिए शुरू करते कोड यहाँ पे. Inside the title, we'll input say JavaScript say document object model method. Okay, and that is a DOM. And inside, okay, so first of all, we'll talk about say like I'll use inside the H1, say document using document dot get element and then by ID. ठीक है. तो by ID, तो इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर. ठीक है. तो इसके बारे में अगर बोलना है तो सो इट्स बेसिकली JavaScript method used to access. ठीक है, used to access and manipulate elements in a document object model, that's a DOM. So document object model of an HTML page. So the DOM represent यानी जो document object model जो represent करता है basically structure of a web page, and it allows JavaScript to interact with and modify the content and layout of the web page. तो ये basically use करते हैं जो इसका जो main use है. So we can manipulate or you can modify the web page content. So by using the document.getElementById or by tag name. Okay. So शुरू करते कोड. Okay, so simple example I'll take here like how to use this one. So first let me take inside the body tag. So take like in simple form. Say form name equal to form1 or f1. Then say enter num1, the number 1. So input type equal to text. अभी name के बदले में यहाँ पे will take ID. ID equal to say text box 1 or T1. Then take break row. Then second one, second text box. So ID equal to text box number 3 or 2. Then यहाँ पे result. So result and ID equal to text box number 3. And also we'll take a button to initiate action. Say input type equal to button and ID equals to say button 1 or B1. वैल्यू इक्वल टू से ऐड. तो इसका जो फंक्शन के नाम भी अभी लिखेंगे यहाँ पे. सो ये ऐड बोल के अभी मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करूँगा ऊपर. ठीक है. नाउ द दिस पार्ट इज ओवर, यानी द बॉडी पार्ट इज ओवर. सो लेट मी रन दी फॉर्म. तो ये फॉर्म ऐसे यहाँ पे देखिए. ठीक है. जैसा आप यहाँ पे नंबर 1 एंड नंबर 2 आप इनपुट करते हैं. सो व्हेन यू क्लिक ऑन ऐड बटन, सो डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ और सम ऑफ दीज टू नंबर. ठीक है. तो चलिए कोड को यहाँ पे ऐड करते. स्क्रिप्ट का जो ब्लॉक है बेसिकली इनसाइड द हेडिंग टैग. तो सॉरी, script type equal to text or JavaScript. ठीक है. देन यहाँ पे शुरू करेंगे यहाँ पे. सो document dot get element by ID or by tag name. So I take now by ID. ठीक है. तो टेक्स्ट बॉक्स नंबर 3 में मुझे रिजल्ट शो करना है यहाँ पे. सो इसीलिए मैंने यहाँ पे ID का जो नेम है यहाँ पे C, जैसा T3 I took. So document dot get element by ID. So T3 dot value equals to. ओके. सो पार्सेंट यानी जो कन्वर्ट कर रही है इंटीजर फॉर्मेट में. ओके. सो इनसाइड द ब्रैकेट हियर सो मेंशन से T1 डॉट वैल्यू. ओके. सो T1 and then T2 values. So just copy the same syntax. So T2 dot value. So document percent of document dot get element by ID T1. Okay. So this is the function. So inside the function, so we need to add a function also here. So I forgot to mention the function name here. So please take a function. Okay, so ये सब function के अंदर होना चाहिए because I already called the function name here on this button, like on click event, right? तो चलिए कोड को रन करते हैं यहाँ पे. So reload the page. So let me input the number here. Say then click on add button. तो देखिए यहाँ पे result sum equals to 2 plus 4, right? 6. So change करते value के यहाँ पे. Then click on next add button once again. You will get the sum of these two numbers, right? So similarly to perform like remaining arithmetic operations. So I add remaining 3 buttons, like next one called say subtracting. Okay. So here subtraction and ID equals to say button 2.
and next button name called but id name called button 3, and here it is multiplication. Okay, and the button on click, that's function. So function अभी हम ऐड करना पे जाके हेडिंग सेक्शन के अंदर, राइट. सो बटन id 4 और ये है डिवीजन. सो डिवीजन एंड फंक्शन नेम इक्वल टू div. ठीक है, तो चलिए ऊपर हेडिंग के अंदर, and here we'll see simply copy the syntax. So copy the syntax here, then paste it. इसको चेंज करेंगे यहाँ पे फंक्शन का नाम सब और subtract, then change the operator sign, that is minus. Similarly we'll change this one into say multiplication or mul, and here symbol we need to put the star, that's the multiplications, right. And the last one which is div, that's a division, so डिवीजन सिंबल. ठीक है, तो चलिए कोड को रन करते हैं. यहाँ पे एक साथ तीन चार चार बटन राइट टोटली. सो इनपुट करते हैं वैल्यू के यहाँ पे, पहले ऐड पे क्लिक किया, फिर सब्ट्रैक्ट भी किए. ओके, 4 - 3 मल्टीप्लिकेशन 4 × 3 एंड डिवीजन 1.33 देखिए. सो क्लिक पेमेंट ऑफ these 4 buttons कंटेंस फंक्शन कॉलिंग. तो यहाँ पे 4 फंक्शन हमने लिया. फर्स्ट फंक्शन का नाम ऐड. सो जैसा आप ऐड पे क्लिक करते, इट विल रिसीव द वैल्यू फ्रॉम t1 t2, right. So t1 t2 means that's text box number 1 and text box number 2, and added, I mean the values are added, then stored inside the text box number 3, right. So similarly subtract, multiply and divide. Okay, so this is the example like how to use the document.getElementById in JavaScript.